So, my dear friends, there are some features of spoken English that you need to understand. So, these features are known as the following features that we have listed out here. So, let's look at these features one after the other. So, prosodic features. All right. So, let me tell you the meaning of prosodic in Hindi. अभियोगात्मक, आप समझ पाए? So let me just also read out the meaning of the word prosodic to you. In linguistics, linguistics is the branch of languages that does with the mechanics of the language. So in linguistics, prosody is concerned with those elements of speech that are not individual phonetic segments but are properties of syllables and larger units of speech, including linguistic functions such as intonation, stress, and rhythm. Such elements are known as suprasegmentals. So दोस्तों बहुत सारी, there are so many things which give language, especially spoken language, because we are talking of spoken language, which is different from written language. When these features are there and you are able to make use of them, then your spoken language becomes much more powerful than language. हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो भाषा को और अधिक पावरफुल बनाते हैं. उन्हीं फीचर्स को हम प्रोसोडिक फीचर्स भी कहते हैं और उनका संबंध होता है हम किस वर्ड को कैसे इंटोन कर रहे हैं, कैसे उसको बोल रहे हैं, कहाँ पे हम स्ट्रेस कर रहे हैं, क्या हमारी जो भी स्पीच है या डिलीवरी है उसका रिदम, उसका टेम्पो, हमारी पिच, ये सारी चीजें हम पैरा लैंग्वेज से भी रिलेट कर सकते हैं. अब जैसे ये she sells seashells on the seashore, the shells she sells are seashells, I am sure. ये बड़ा टंग ट्विस्टर बोलते हैं इसको. तो ये this also has prosodic features. And when we speak this, if we practice such tongue twisters, then it tests all these things. Prosodic features को test भी करता है. She sells seashells on the seashore. The shells she sells are seashells, I'm sure. You understand? So it's so difficult. कहाँ पे स है, कहाँ पे श है. She sells seashells on the seashore. The shells she sells are seashells, I'm sure. So, you'll have to practice a lot. The other features of spoken language, which we will also find sometimes people using in informal written language. So contraction, elision and ellipsis. So words को लेके जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं उसको लेके आप परेशान मत होइए. सिर्फ इस बात को समझिए कि ये जितने फीचर्स हम बात कर रहे हैं ये सभी फीचर्स आपके स्पोकन लैंग्वेज का अंग है. दे आर पार्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज. जैसे अ रिड्यूस्ड फॉर्म मार्क्ड बाय एन एपोस्ट्रोफी. सो कैनॉट को हम क्या करते हैं, उसका एन और ओ हटा देते हैं एंड एक अपोस्ट्रोफी लगा के बोलते हैं कांट. When you are typing a mail or when you are typing in word, आप कांट लिख के देखिएगा, वो उसको अंडरलाइन कर देगा, वो कहेगा इसको कैनॉट लिखिए. ठीक है. अब जैसे हम कहते हैं आई विल, सो हम अगर WI हटा देंगे और अपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो अपोस्ट्रोफी जो हमने हटाया उसके लिए है एंड उसको हम प्रोनाउंस करेंगे आइल. I'll do it. I can't. I cannot is right also. But spoken language में this is one thing that we do. We contract.
Are not, aren't, were not, weren't. They weren't there when I reached. They aren't there. So इस तरह से हम इसमें contractions करते हैं which are part of spoken language. Now, elision, ये क्या है कि एक दो चीज को हम रन ओवर कर देते हैं, एक तरह से स्लर कर देते हैं, जैसे गोइंग टू, गोना. नाउ दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज ओनली, एंड इसको स्लैंग का पार्ट भी मानते हैं. आप अगर किसी फॉर्मल उसमें गए हैं, इंटरव्यू में गए हैं, आप किसी स्टेज पे हैं, स्पीच दे रहे हैं, आप कहीं पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या किसी क्लाइंट से आप फोन पे बात कर रहे हैं, तो वहां पे यू मस्ट यूज द फुल फॉर्म गोइंग टू. This is very, very informal. This is between friends. This is between college students. This is in a very informal atmosphere. So I'm gonna do it. I am going to do it. I wanna be. So wanna be, what's up? What's up, dude? What's up? So what is up? That in effect means what is happening. I wanna be traveling. I want to be traveling. मतलब मैं travel करते हुए होना चाहता हूँ. I'm gonna do this. I'm going to do this. So in informal and with friends and with your groups, this is perfectly acceptable elision of any kind, but not in formal setup. So remember this. I have a lot of, see, every day I'm interviewing a lot of students. And when I interview students every day, I find that some of the students, when I ask them, something about themselves, so they'll say, I want to be, I'm gonna do. So then I have to tell them that, listen, students, this is a formal thing. I'm interviewing you, so you should not be using gonna, wanna, etc. But they are fine in informal setups. Now, the omission of part of a grammatical structure. So this happens a lot in speaking. Instead of asking, are you bored? So you just ask, you bored? And instead of answering, I'm bored a bit, a little bit, no, you just say a bit. Sometimes you will only utter one word instead of a sentence. Done? What you mean is, are you done? Have you finished? Or you say, finished? Done? Over? And the other party will say, yeah, yes, done. Yeah, finished. Okay. Otherwise, you can say, okay, yes, okay, fine. Let's go. So, this is part of spoken English. And this is also part of written English. When you see dramas, movie scripts, there the dialogue will be like this. Why? Because it is spoken English that they are talking about. So there you will find this kind of a construction. You in? Yeah. Okay. Let's go. Coming. All right. जीनू, what are you saying? जीनू, 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 जीनू. मम्मी जरा जीनू को देख लेना. जीनू क्या बोल रहा है? Now, features of the spoken language. So, features that result from limited processing time. Now, my dear friends, there's a lot of stuff that happens because during speaking, you are not able to find, during writing, you have a lot of time on your hands. But when you are speaking, आपके पास उतना समय नहीं होता, इसलिए हम कई बार समय के अभाव में ये गलतियां भी करते हैं या ये चीजें हमारे बोलचाल में आ जाती हैं. एंड दीज आर नोन एज फॉल्स स्टार्ट, रिपेयर्स एंड फिलर्स. हम सब के साथ ऐसा हो सकता है. So sometimes we start something and then
we either repeat it or we try to reformulate. बहुत लोग करके बोलते हैं, बहुत लोग I mean right. Well, let's look at the applications. Let me just ask initially this. Uh, uh, so this can happen to many of us when we've made a start, but we are not sure of what to say next. So this is known as a false start, and we are all victims of this sometime or the other. कभी न कभी हम सब के साथ ऐसा जरूर होता है. इसके दो रीजंस हैं. पहला रीजन है हमने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ हम सोच नहीं पाए कि हमें नेक्स्ट क्या बोलना है, या हमने कुछ सोच के कि हम ये बोलेंगे स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े कोई और थॉट दिमाग में आ गया कि हमको उसकी जगह ये बोलने से ज्यादा अच्छा होगा, तो हम स्टार्ट करेंगे राइट. वेल, लेट्स लुक एट द एप्लीकेशन. लेट मी जस्ट आस्क इनिशियली दिस क्वेश्चन. सो you are not in two minds, you are in three minds. The first mind said, right, well, let's start, कुछ बोलना चाहती. Then आप बोले कि नहीं, let's look at the applications. Then you said, no, let's not look at the applications also. Let me just ask initially this question, and then probably we'll look at the applications, and then we will do something else. So this becomes a false start. So with a little better preparation, अगर आप जो भी चीज बोलना चाहते हैं उसका प्रेपरेशन पहले से थोड़ा अच्छी तरह किया है, तो फॉल्स स्टार्ट से आप बच सकते हो. दूसरा, आप किस समय फॉल्स स्टार्ट से बचोगे? जब आपका कमांड अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा होगा. अदरवाइज अनप्रिपेयर्ड अगर आपको कुछ बोलने को कहा जाए तो फॉल्स स्टार्ट हो सकती है. बट if you have a false start, do not feel nervous, do not give up, do not freeze. false start को हम फिर good start में convert कर सकते हैं अगर हम confidence के साथ अपनी बात को बोलते चले जाएंगे, अपने काम को आगे बढ़ाते चले जाएंगे. Now, repair. So, आप कोई भी चीज अगर बात कर रहे हैं, कोई चीज में आपने कोई ऑल्टरेशन किया या ऑडियंस या उसमें आपने कुछ भी किया, तो आप कुछ चीज को क्लैरिफाई करके और फिर उसको आगे बढ़ते हैं. जैसे कुछ आपने पहले कहा था उसमें आपको कोई संशोधन करना है, कुछ क्लैरिफाई करना है, कुछ नया बोलना है, तो आप वो रिपेयर्स भी कर सकते हैं कि yesterday's lecture I said this, but apart from that I would like to add this to it. ठीक है ना? उसी बात में जब आप कुछ कह रहे हैं पहले और आगे जाके आप उसमें कुछ संशोधन या कोई ऑल्टरेशन करना चाहते हैं, that also you can do that. There's absolutely no problem. You can carry out repairs in what you have said. See, why do you require this in spoken English? You require this in spoken English because रिटन इंग्लिश में तो हम एडिट करते हैं, रीरीड करते हैं, सब कुछ करते हैं, रिव्यू करते हैं. स्पोकन इंग्लिश में व्हाट वी हैव सेड. सो इफ यू वांट टू मेक सम रिपेयर्स, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. ऑलराइट, यू कैन मेक दैट चेंज. नाउ fillers. Now again, this happens when there is a gap in the thought process. So whenever my thought process is either disturbed or I'm in two minds, then I will always use these fillers. Well, so please do not fall prey to this. Sometimes people get into the habit, and a lot of people feel that it's very trendy to say, friends, I'm here to tell you about the response that this company has planned to, battle the challenges
तो वो फिर अपने को समझते हैं हम बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं, बहुत हम टॉप के स्पीकर बन गए क्योंकि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं. So don't fall into that thing, because then you get so used to doing that becomes a huge problem. Now, the other feature of spoken language, back channeling and turn taking. So this is a very important feature. So feedback for a speaker, when the audience gives feedback in two ways. See, when you are on a telephone call, then if you keep saying something like this, okay, I see, really, okay, wow. So that tells the speaker that you are listening. That is a response. That is back channeling back to the speaker. And when you are presenting live or virtually, and you can see your audience, then apart from this, body language also can provide feedback. आपके सामने अगर आपकी ऑडियंस है वर्चुअली या किसी हॉल में या मीटिंग में, तो अगर वो लोग अपना हेड नॉड कर रहे हैं, अपनी आईज से आपको संदेश दे रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से दे रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा फीडबैक और बैक चैनलिंग का काम करता है. प्लस इस तरह से जब हम बोलते हैं आई सी, ओके, रियली, ओ ओके, ऑलराइट, तो ये एक बैक चैनलिंग होती है. दिस इज एन इंडिकेशन फॉर आवर स्पीकर. Now, this is very, very important, and I call this the walkie-talkie. Walkie-talkie अगर आपने सिक्योरिटी वालों के पास देखा है, तो walkie-talkie में क्या होता है? You have communication which is one person at a time. So you have to switch. You have to switch the mode. One mode is for listening, one mode is for speaking. So first one person speaks, then the other person speaks. So this is an orderly arrangement. This is called turn taking. So everyone who's conversing with people should give others a chance to speak. So if you are in conversation with someone, then after 2-3 sentences आप 1-2-3 सेकंड का pause जरूर लीजिए, so that the other person, if the person has something to say, will start saying. अगर आप बोलते चले जाएंगे नॉन स्टॉप, देन अदर पर्सन ओवरलैप करने की कोशिश भी करेगा, देन वो बोलेगा यार इसको बोलने दो यार, बेकार है, इससे कुछ बोलना ठीक नहीं है, इसको बोल लेने दो यार. तो आपका कभी टू वे कॉन्वर्सेशन अच्छा नहीं हो पाएगा. दूसरों को बोलने का मौका दें, और वो मौका आपको जल्दी जल्दी देना चाहिए, नहीं तो दूसरा आदमी बोर हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आपसे बात करना कोई पसंद नहीं करेगा. सो दिस टर्न टेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, कोई स्पीकर आया है जो टॉक देने आया है, प्रेजेंटेशन देने आया है, आप बीच में कुछ बोलते हैं, वो या शुरू में वो बता देते हैं कि प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, एट द एंड वी विल टेक क्वेश्चंस. इन दैट केस डू नॉट वरी, डू नॉट डिस्टर्ब द स्पीकर, let the speaker finish, then the speaker will give you time. And there are many speakers who will finish one segment of their talk or presentation and give people time. Any questions? Is there any observation? So it depends on the speaker. Please follow that. But otherwise, normal conversation, turn taking is very, very important. Now, अब देखिए स्पोकन लैंग्वेज जो है उसका एक बड़ा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो आता है वो हमारे एक्सेंट से आता है. एक्सेंट हमारे एज, हमारा सोशल सर्कल क्या रहा है, हमारी सोशल क्लास, हम किस रीजन से आ रहे हैं, किस मीडियम के स्कूल में पढ़े हैं. इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, देन देयर आर सो मेनी रीजन्स, सो वी विल हैव so many regional influences on our accents. हमारा जो उच्चारण है, हमारा जो लहजा है, उसके ऊपर इतने सारे इन्फ्लुएंस रहेंगे अलग अलग रीजन के, अलग अलग लोकेलिटी, कम्युनिटी के, कि उसको हमको अगर टैकल करना है तो उसके लिए हमको उस पे वर्किंग शुरू कर देना होगा. हमने बात भी की है इस चीज की. इन आवर क्लासेस वी हैव स्पोकन अबाउट दिस.
So you have to get to work on this, and once you get to work on this, slowly you will find that all the layers of influence on your accent you can start removing one by one, and you can create a neutral accent for yourself. डायलेक्ट, तो डायलेक्ट क्या है? ये अलग अलग रीजन्स में जिस तरह की भाषा बोली जाती है. सो आप इंग्लैंड जाएंगे तो इंग्लैंड के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डायलेक्ट बोली जाती है इंग्लिश की. आप यूएस जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, उनकी अलग अलग जगह की अलग अलग डायलेक्ट होती है, जैसे हमारी हिंदी की भी होती है. आई एम श्योर मराठी में भी ऐसा होगा कि अलग अलग रीजन्स में मराठी डायलेक्ट थोड़ी थोड़ी चेंज होगी, गुजराती भी चेंज होगी, बंगाली भी चेंज होगी. मैं बांग्लादेश भी गया, मैं वेस्ट बंगाल में तो रहा ही हूं, तो वहां दोनों बंगाली में भी थोड़ा अंतर है. यू अंडरस्टैंड? तो उसको बोलते हैं डायलेक्ट. तो आप कौन सी डायलेक्ट बोल रहे हैं, विदेश में वो लोग पकड़ लेंगे. यू आर फ्रॉम द साउथ ऑफ इंग्लैंड, यू आर फ्रॉम लेक डिस्ट्रिक्ट, यू आर फ्रॉम देयर, यू आर फ्रॉम स्कॉटलैंड, यू सीम टू बी फ्रॉम आयरलैंड. तो अलग ढंग से बोलते. तो हम लोग भी ऐसा ही बोलते हैं, हमारी भी डायलेक्ट है. अगर कोई यूपी से आया है, कानपुर लखनऊ से, व्हाट यू आर डूइंग यार, आल, यस, व्हाट आल इज डन, व्हाट हैड बीन डन क्लास टुडे, प्लीज टेल, बताइए बताइए. So it will be different. So from different parts of India, if you are there, then your dialect of English will also be with that regional influence. Now, different functions of spoken language. Now, one of the most common functions is chit chat. You know, you talk, you know, interactional. When you meet someone and you start chit chatting, you start talking about the weather, you start talking about what's happening in the country, start talking about sports, talk about so many things. So that is known as chit chat. So one of the big functions of language is to help you chit chat, and through chit chat you can learn to speak a language well. तो दोस्तों, ये चिट चैट जो है ये स्मॉल टॉक है, और ये हमारे आपस में जब हम कहीं भी मिलते हैं, ऑफिस में भी अगर हम काम कर रहे हैं, इनफॉर्मली हम कॉफी मशीन के पास मिलते हैं, कैंटीन में मिलते हैं, वैसे ही हम कहीं खड़े होकर 2 मिनट बात कर लेते हैं. दैट इज ऑल पार्ट ऑफ चिट चैट. चिट चैट में आप ऑफिशियल बात भी कर सकते हैं, लेकिन ये चिट चैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ स्पोकन लैंग्वेज. हम फोन पे भी चिट चैट से शुरू करते हैं, फिर काम की बात करते हैं, फिर चिट चैट करते हैं, फिर एंड करते हैं. सो इट्स ऑल राइट एंड इट्स अ गुड वे ऑफ डूइंग इट. आप इंग्लिश में, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट चिट चैटिंग इन इंग्लिश. नाउ देयर आर अदर स्पीकर ओरिएंटेड टॉक्स वेयर you are being instructed by your team leader, your bosses are telling you what is to be done, your HR is training you, somebody has come from outside to give you a talk. So these are things where you have a transactional talk where there's a give and take. So a lecture is also like that. तो वहां पे आप फिर भाषा का इस्तेमाल होता है स्पोकन लैंग्वेज का, एंड स्पोकन लैंग्वेज हेल्प्स यू टू have two-way communication and to understand what is being done. Now, my dear friends, I would like to end this presentation with a quotation from a very, very great person, Benjamin Franklin. Tell me and I'll forget, teach me and I'll remember, involve me and I'll learn. So unless you get involved, speaking a language is like swimming. If you don't get involved, you don't learn. तो जितने लोग भी अभी ऐसे हैं जो किनारे पे बैठ के सीखना चाहते हैं, उनको पानी में तो उतरना होगा. और वो पानी क्या है? वो पानी है हमारा पूल, जहां पे हम अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं. तो अनलेस यू डाइव इनटू द पूल, जो पूल में जितनी देर ज्यादा नहाएगा वो उतनी जल्दी स्विमिंग सीख पाएगा.
अगर आपको लगता है बिना पूल में नहाए आप साइड में बैठ के मस्ती करके पूरी तरह सीखने के बाद ही उतरेंगे, तो बहुत मुश्किल होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स. All right, so this PPT is done. Now we'll go to the next stage.